What was the most dominant idea which came from French Revolution to Indian Constitution? I know you will say very simply, which is being taught to everybody from day one in polity, and that is liberty, equality, and fraternity. Among these three principles, today we are going to focus a lot on the equality principle, and that is equality of status and opportunity. So the question comes, and that is it true that in India 50% of our population is not benefiting from this idea of equality of opportunity and status when it comes to political representation, access to political power, access to resources that is available in the society? So welcome to SRIRAM IAS. My name is Saurabh, and today for GS paper 1 society for mains 2025, those of you who are going to write mains 2025, this year there is a large chance that there will be a question from this section, because last year there were elections, and this is obviously a very important topic, and that is why UPSC has been asking questions around these issues. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स को. Idea of equality is enshrined in India's preamble. It is enshrined in India's constitutional principles, be it fundamental right, Article 14, Article 15, Article 16, the right to equality. Article 39A, the directive principle of state policy, which talks about exactly the same thing. That role of woman is absolutely critical when it comes to politics, because it is integral to the idea of gender justice. Without access to political power, political representation, the gender justice agenda can never be fulfilled. And that is why जो उनका representation है women का, be it descriptive or substantial, assumes greater importance. Let's just look into the data which has came to us this year, the global gender gap index data, which puts India where in the committee of nations we are not even in top 100. Just look at this. The global gender gap index have 4 verticals. One of them is political empowerment. Here our rank is 69th. Year 2000, when this century began, the 21st century, there the representation of women in India's lower house of parliament, that is Lok Sabha, which is a directly elected house, was 9%. We were at the level of Ghana Republic, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है. Year 2000, 2019 we were at par with Malaysia. Between year 2000 and 2025, the percentage of women who are represented into the lower house of the national parliaments almost doubled. So the global average right now is 25%, precisely 25.2%. लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जहां वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो परसेंटेज वाइज है, वो है 25%. एंड व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया in the last election that we have seen, the 18th Lok Sabha that we see right now, 74 women MPs are there, which will be around how much? 13.63%. So global average is 25%. We are at 13.63%. So the question which naturally comes, are women in India getting their due, or they are getting the access to justice, that is political justice? So women जो representation है जनरली, उसको हम देखते हैं 2 तरीकों से. पहला है descriptive representation. Descriptive representation, which is mostly symbolic in nature, which is mostly related to tokenism. So how many women you have in the national parliament? By the way, Rajya Sabha has around 12% women. That is the upper house of Indian parliament. 12% Rajya Sabha. Less than 14% in Lok Sabha. In state assemblies, you have around 8 to 10% women in state assemblies you have.
So descriptive representation talks about symbolic representation. Number of seats in some cases are reserved for women, at least when it comes to the Panchayati Raj institutions. Here we have around 1.5 million women representative. Why? Because we have a lot of reservation here. 33% is mandatory reservation. In some states, we have more than 50% also, close to 50% reservation we have for women in Panchayati Raj institutions. सो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर, राज्यसभा को भी अगर हम देखें और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में जो परसेंटेज ऑफ वुमेन है, दोज हु आर गेटिंग इलेक्टेड टू द ऑफिस इज लेस देन द ग्लोबल एवरेज. Not only this, but the number of women candidates, this is far more important as far as women's representation, descriptive representation in the political offices are concerned, because here the number of women who been given tickets by the parties, so political parties are not giving tickets to the women. Less than 15% tickets have been given to the women. So ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. So parties, political parties के साथ ये प्रॉब्लम है, because there is no, in most of the parties there is no internal democracy. So when it comes to selection, when it comes to training, when it comes to internal promotion of leaders, women leaders in political parties, it suffers from systematic, institutional, socio-cultural, socio-economic lacunas. तो सिस्टमेटिक बैरियर्स महिलाओं के लिए खड़े किए गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़े किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको टिकट्स नहीं मिलती और वो इलेक्शंस नहीं लड़ते. अगर नंबर ऑफ टिकट्स ही 15% से लेस होंगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली विल बी लेसर. So this is a serious challenge that is coming to women in Indian politics. However, we also should always keep that in mind, that these women, that is 50% of India's population, they are not uniform. ये कोई यूनिफॉर्म कैटेगरी नहीं है. We have huge diversity in our women population on the basis of caste, creed, language, race, ethnicity, religion, class. Across we have huge diversities. So इसको बोलते हैं इंटरसेक्शनलिटी वाली जो अप्रोच है वो यहाँ डिप्लॉय करना जरूरी हो जाती है. A Dalit woman may not have similar issues compared to a Savarna woman, but definitely they will have commonalities of issue when it comes to men or the patriarchal system of the society, because both of them will be influenced by the same system. तो जो रिप्रेजेंटेशन है यहां पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्टिव जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सिचुएशन हमने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में देखी कि कितने निचले स्तर पे हम हैं, 69th लेवल पे हैं. सो राइट टू इक्वालिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन्ड है, द वुमेन इन इंडिया आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. ये तो हो गया प्लेन नंबर्स की बात, क्वांटिटेटिव यहां पे बात हुई. अब हम देखते हैं जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इन वुमेन लीडरशिप में, क्या डेवलपमेंट्स हुए. तो वुमेन हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इवन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा. Gandhi ji was credited with bringing primarily women into the national mainstream. Yes, Swadeshi movement of 1905 had huge participation of women, but mass level पे, ground level पे उसको perpetuate करना, उस idea को that women also have a stake in India's freedom movement was brought out by Gandhi ji. So apart from farmers, apart from youth, women were also brought into the fore, and they actively participated into the national freedom movement by picketing the liquor shops, by burning the foreign manufactured goods. They have played a very very important role in Gandhiji's satyagrah. Dandi march has seen equal representation of women, participation of women. Bharat Chodo Andolan also saw
vigorous women participation. Many leaders emerged, like Sarojini Naidu, like Annie Besant, Home Rule League movement जिन्होंने चलाया था. So they actively participated, and it was the effect of the international movement also that after our independence we have seen Vijay Shankar, Vijay Lakshmi Pandit, like luminaries who represented India at the international level. First woman chief minister in Uttar Pradesh directly came from what? National Freedom Movement of India. और उसके बाद एक systematic set of leaders emerged, primarily led by the most powerful Prime Minister of India we have ever seen, Srimati Indira Gandhi. The first female Muslim or minority Chief Minister of India. Yes, Anwara Taimur. She was the first minority Chief Minister of India, Anwara Taimur, in 1980, 81, Assam. We saw emergence of women leaders from the Bahujan movement, that is Susri Mayawati. We have seen emergence of leaders from the Hindu right wing like Sushri Uma Bharti or late Srimati Sushma Swaraj ji. We have seen long-serving chief ministers in India who have been women like Sheila Dikshit, late Sheila Dikshit ji, who served for many years ruling Delhi or administrating Delhi. Jayalalitha ruled Tamil Nadu. Right now, the only chief minister we have is from Bengal, Mamata Banerjee, who is also a very long-serving chief minister. Yes, Delhi also have a chief minister now, who is a woman, Srimati Rekha Gupta ji. So, Vasundhara Raje Scindia, we have seen a chief minister. So, many such chief ministers have emerged who are in the federal schema of India. They are not serving at the central level, they are ruling effectively in the state level. Mahbooba Mufti has ruled the erstwhile state of Jammu and Kashmir, which is now a union territory. At the center level, in the top 4 ministries, which includes Defense, Home Ministry, Foreign Ministry, and Finance Ministry, we have seen the longest serving, continuously longest serving Finance Minister of India, who is still serving, Ms. Nirmala Sitharaman ji. She is the longest serving, continuously longest serving Finance Minister of India. तो वुमन लीडरशिप के लेवल पे भी there is obviously a galaxy of leaders that we have seen who have represented India, put forward the ideas that women also are equally capable in serving the Indian population. तो लीडरशिप के लेवल पे भी काफी तेजी से डेवलपमेंट हुए, लेकिन एज आई जस्ट स्पोक अबाउट, राइट नाउ वी हैव ओनली 2 वुमेन चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया. वी हैव ए पॉसिटी ऑफ वुमेन लीडर्स. तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, एंड दैट इज सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन. अगर डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सिंबॉलिक था, टोकनिज्म था, because women are also accused by well-meaning feminist scholars also in many cases that they serve as proxies to their husbands, like Srimati Rabdi Devi, who has served for long years as a chief minister of Bihar, but she was being accused of being a proxy. The concept of sarpanch pati exists in India because PRI institution, Panchayati Raj institutions, they have a reservation for women. So उनके बिहाफ में उनके पति, उनके हस्बैंड्स रूल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं. तो पंचायत पति एज ए कॉन्सेप्ट इमर्ज इन इंडिया. दीज डेज ए वेरी फेमस सीरीज इज आल्सो देयर, पंचायत नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है पंचायत पति का, सरपंच पति जिसे कहते हैं. सो बात यहां पे आती है सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन की. आर वुमन इश्यूज बीइंग एड्रेस्ड प्रॉपरली और नॉट? That is the question which should be focusing on. Symbolism, tokenism एक जगह पे, लेकिन यहां पे हम देखते हैं क्या वुमन इश्यूज उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बात बार बार उठती है कि क्या महिलाओं के विषय सिर्फ महिलाएं उठा सकती हैं.
ये तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो आइडियोलॉजी थी प्री पार्टीशन एरा की, वो यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम कर सकते हैं, हिंदू का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ हिंदू कर सकता है। तो ये जो माइनॉरिटी मेजोरिटी कॉम्प्लेक्स थे उससे हम आगे निकल चुके हैं। वी आर व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन व्हाट? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो क्या महिलाओं के अधिकारों की बात सिर्फ महिला कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकते? सो हियर कम्स दिस क्वेश्चन, हुएवर इज आर्ग्यूइंग ऑन बिहाफ ऑफ वुमन, क्या जो आर्गुमेंट हो रहा है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये मायने रखता है। कौन उस आर्गुमेंट को उठा रहा है ये मायने नहीं रखता। तो सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन assumes greater importance. Just look at the political development in last what 15 years that we have seen. This government alone at the central level, many state governments also. Ladli Bahina Yojana is what? It is aimed at what? Women voters. There have been many substantive laws which have been brought, like Maternity Amendment Act 2017, Prevention of Sexual Harassment at Workplace, POSH Act 2013. These laws have been brought. Recently, triple talaq was declared unlawful by the government, by the Supreme Court first, and then the parliament brought a law. So women related issues are coming to the fore. Political parties, political leadership is responding to those demands. Women are also voting as a bloc because they have commonalities of interests. They have many such interests जो women जिनको हम issues कहते हैं। जैसे एक इशू है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, they are not getting proper representation, they are not getting access to power, access to resources जो कि सोसाइटी में अवेलेबल हैं। You have socio-cultural issues like dowry, like domestic violence, like discrimination in the family, like institutional barriers, glass ceiling, चैलेंजेस टू न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सारे इश्यूज उनके सामने निकल के आते हैं यहाँ पे, सोशो कल्चरल जो बात है। इसके अलावा वी आर लुकिंग इनटू द इकोनॉमिक डोमेन, दे हैव मेनी इश्यूज लाइक वेज गैप विच एग्जिस्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन, it exists between men and women, they don't get paid for the same job, they don't get paid equally. तो वेज गैप भी एग्जिस्ट करता है इकोनॉमिक डोमेन में। जो इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी काफी कम है। महिलाएं काम करने के लिए आगे नहीं आ रही बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल कल्चरल बैरियर्स। दे आर ओवरबर्डन्ड विद डोमेस्टिक वर्क विच इज अनपेड। तो चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हाउसकीपिंग, एवरीथिंग इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन देम। आर सिटीज आर नॉट सेफ फॉर देम। यस, तो ये जो वायलेंस का इशू है ये भी बहुत ही सीवियर है। सेफ्टी की इनको इश्यूज है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अज्यूम्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस। वायलेंस है, डिजिटल वे में आजकल हरासमेंट है, स्टॉकिंग है, फेक न्यूज, डीप फेक आ गए हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं हरास करने के लिए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। सिस्टमेटिक असॉल्ट्स, रेप, मोलेस्टेशन, अभी हमने देखा कि कैसे पिछले डिकेड्स में मैसिव बड़े बड़े केसेस हुए हैं रेप और मोलेस्टेशन को लेके। शुरुआत होती है मोस्ट फेमस केस की 2012 में, निर्भया इसको कहा जाता है, निर्भया कांड, निर्भया केस, दिल्ली। We have seen the previous decade Kahuta case of Jammu and Kashmir. Unnao rape case we have seen, which was very famous. These days, last year we have seen the Car Medical, RG Car Medical College in Calcutta. A massive controversy erupted out of it. So such cases are, they are not the only rape cases in India. Thousands of rape cases get registered in India every year, but they, because they were in the news cycle, news media put forward those cases vigorously, we know them. And they became the symbols of women's dissatisfaction vis-a-vis the Indian system, policing, judiciary, political parties, etc.
तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है महिलाओं का जो विषय है। गर्ल चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके न्यूट्रिशन, उनके हेल्थ, और वुमन हेल्थ अपने आप में एक सेपरेट कैटेगरी है, जिसमें यू कैन टॉक अबाउट maternal mortality ratio, MMR, you can talk about anemia. Such issues are there which are woman specific in nature. So कौन इन विषयों को उठा रहा है, कौन इन विषयों को आगे लेके आ रहा है? बिकॉज वुमन आर नाउ बिहेविंग लाइक ए कलेक्टिव ब्लॉक, एक जैसे वोट करते हैं वो। तो लाडली बहिना स्कीम जैसे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स आर पुशिंग दीज स्कीम्स. Laws are being changed to facilitate the demand which is coming from women electorates. Women are also playing equally important roles in not just, this is the political aspect, हम बात कर रहे थे representation की, substantive representation की. They are actively participating in what? The youth wing or the college politics across the country. They are also participating in human right campaigns. They are also participating in स्पेसिफिक इश्यूज लाइक जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोटेस्ट मूवमेंट चले उसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया. स्पेसिफिक इश्यूज लाइक एनआरसी रिलेटेड या सीएए रिलेटेड, जो दिल्ली में शाहीन बाग का मूवमेंट चला, लेड बाय माइनॉरिटी मूवमेंट और पर्टिकुलरली द दादीज ऑफ शाहीन बाग. सो सच मूवमेंट लेड बाय वुमेन आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें सिर्फ महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ नहीं देखना कि कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं. जो सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट. दैट वुमेन आर नॉट सिटिंग एट होम एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ आप इलेक्शन लड़के पार्टिसिपेट नहीं करते, थ्रू प्रेशर ग्रुप्स यू पार्टिसिपेट, थ्रू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यू पार्टिसिपेट, through writing editorials, articles, protest movements you participate, and there women are actively participating. तो substantive representation काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन सिर्फ 400 जो सीट्स हैं उनके बेसिस में हम बात नहीं कर सकते कि रिप्रेजेंटेशन कितना है. इवन दो सरकार ने अब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो लेके आ गए हैं, जिसमें 1/3 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं भारत की लोकसभा के अंदर और भारत की स्टेट असेंबलीज के अंदर, और दिल्ली स्टेट असेंबली के अंदर भी 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन आफ्टर द सेंसस डेटा व्हेन इट कम्स. ये इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा, जिससे उम्मीद है कि महिलाओं का एज पर द क्रिटिक्स दे विल से डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, सिंबोलिज्म बढ़ जाएगा. लेकिन एक्चुअल जो पावर है महिलाओं के हाथ में, इतनी बड़ी मात्रा में 1.5 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव्स वी हैव इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनकी मोबिलिटी नहीं हो रही. इनका जो एक्सपीरियंस है, इनके जो स्किल सेट है, उसका इस्तेमाल भारत की राजनीति नहीं कर पा रही महिलाओं के विषयों को उठाने के लिए. तो वो बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर टू बी ब्लेम्ड हियर, बिकॉज दे आर मोस्टली डायनेस्टीज रन, देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी देयर, फैमिली रन होती है मोस्टली ये, और यस इलेक्शंस में पैसे भी बहुत लगते हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. सो वुमेन गेट ए लॉट ऑफ disadvantages when it comes to access to financial resources as well, क्योंकि again the institutional systematic issues again come to the fore, because from the day one when the girl child is born in the family, उन्हें बताया जाता है कि उनका परिवार की जो संपत्ति है उसमें कोई अधिकार नहीं. So this is a critical aspect that we have to see. So despite the fact that women leadership at critical junctures in Indian history after post-independence have proved its mettle, still we have paucity of women leaders. इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें सिर्फ 2 स्टेट्स में अभी हमारे पास वुमेन चीफ मिनिस्टर्स हैं. लेकिन सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है. महिलाओं की जो डिमांड है, जैसे बैनिंग ऑफ लिकर विच लेड टू बैन ऑफ लिकर इन बिहार, बिकॉज वो डायरेक्टली लिंक था डोमेस्टिक वायलेंस के साथ. तो नो पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कैन इग्नोर द वोटर ब्लॉक, एंड दैट इज वुमेन वोटर्स which who are silent, who believes and votes for better law and order, better infrastructure facilities, better sanitation facilities, access to gas जैसी स्कीम्स, उज्ज्वला स्कीम्स चलाई गई हैं, इंडिविजुअल टॉयलेट का जो कंस्ट्रक्शन था विच फैसिलिटेटेड वुमेन वोटर्स टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर पार्टी.
क्योंकि ये उनका विषय है। सैनिटेशन, हाइजीन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये उनके विषय हैं। एंड व्हेन वुमन सर्व्स इन पॉलिटिक्स, जो करप्शन है वो भी कम हो जाता है एज पर वेरियस स्टडीज। प्लस दे आर मोर, इन ए वे, मोर सेंसिबल एंड मल्टी फेसेटेड। और जो क्रिमिनलाइजेशन हमारी पॉलिटिक्स का हो रहा है, जो अपराधीकरण हो रहा है, उससे लड़ने में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा अगर हम उन्हें आगे राजनीति में बढ़ाते हैं। तो जब सवाल आएगा मेंस में इसको लेके, तो यू विल फोकस ऑन दिस इशू, द सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू descriptive representation. By pointing out, you will point it out कि substantive representation have substantially increased in Indian politics in the last 15 years by citing the examples which I have just given it to you. And descriptive representation also you will talk about, keeping in mind that we still are in search of more expansive women leadership. ये है ये विषय. That's all. You can also join me on my Telegram channel. I'll meet you again with a new topic of the GS Paper 1 Society Mains 2025. Those of you who are writing the mains, keep writing, keep practicing. You will fetch more marks if you practice consistently. There is no alternative to consistency.